Is it fine now? Good to see you again, and it has been after a long gap that I could see you, and there will be some gaps in between because there are more things that I get occupied with, but we will be finishing up on eco-survey lectures hopefully by the first week of April. So today what we will do, we will begin with monetary management and financial intermediation, chapter 4. The good news is that this chapter will not be a major mains oriented chapter. This is mainly a prelims oriented thing, and that is why I will breeze through this. थोड़ी जल्दी करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये मेंस ओरिएंटेड चैप्टर नहीं है ज़्यादा. मुझे कम उम्मीद है कि यहाँ से मेंस में ज़्यादा सवाल आएंगे या इकोनॉमिक सर्विसेज में आएंगे. ज़्यादा सवाल हम यहाँ पे प्रीलिम्स से भी आ सकते हैं. अगेन एज यूजुअल द चैप्टर्स क्वेश्चन लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन. डू यूज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड द PDF लिंक्स, जो PDF में आपके साथ डिस्कस करूँगा वो लिंक्स मिल जाएंगे आपको, तो उनको आप ज़रूर डिस्कस देख लीजिए, so that you will be able to write your have your basic concepts as good as possible. Good evening all of you joining me now. Wonderful. Good afternoon also to all of you joining me now. Great to have you all here. So we start the session. The first thing that the survey says in this chapter is they say that the year 22 marked the return of high inflation, especially in advanced economies, and they led to unprecedented and sharp cycle of monetary tightening across the countries. So when they use this term monetary tightening, when they use this term monetary tightening, this is increase in interest rate through increase in policy rate. And when they say synchronous, it means most of the global central banks doing it together. It's like RBI increasing the interest rate and Bank of America increasing the interest rate, Federal Reserve increasing the interest rate, Bank of England increasing the interest rate. Usko कहते हैं synchronous. So that was the idea that happened. And another thing they said was that this has been unprecedented, that this has been an unprecedented change that has been there. Unprecedented because we never have seen a COVID pandemic and monetary tightening after that. So that is the basic idea that has been happening. नतीजा क्या हुआ उसका, और इंडिया में क्या नतीजा हुआ? इंडिया में नतीजा हुआ इसका, जो इसके वजह से इंडिया में नतीजा हुआ, what the result in India was that RBI की पॉलिसी स्टैंस बदल गई फिस्कल ईयर 23 में. फ्रॉम May 2022 इंक्रीज इन रेपो रेट बिगैन. एक ये बात हमें दिमाग में रखना है कि RBI ने May 2022 से रेपो रेट बढ़ाना शुरू किया, तो इसीलिए हम कहते हैं RBI's पॉलिसी स्टैंस led to moderation of surplus liquidity. Moderation here is decrease of surplus liquidity. जो पैंडेमिक के समय RBI ने लिक्विडिटी बढ़ाई थी, during pandemic RBI had increased liquidity a lot by emergency credit line guarantee scheme, by giving more loans to MSMEs at which had defaulted in the past, by reducing the repo rate, by reducing the CRR and so on. तो ये सारे तरीके से the targeted long term repo rate, इन सब से RBI ने liquidity बढ़ाई थी पैंडेमिक में. अब RBI liquidity कम करने लगे. They started with that. So increase in repo rate began, and by March 2023 we have seen 2.5% increase in repo rate compared to May. May 2022 में इंडिया का रेपो रेट था 4%, और तब से बढ़ते हुए फरवरी 2023 आते हुए इंडिया का रेपो रेट हो गया 6.5%. इसे ही कहते हैं 250 basis point increase. So this was a factor, and that is why survey claims that the transmission is well underway. ट्रांसमिशन का मतलब होता है कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो एज अ बैंकर इन रिस्पॉन्स टू इंटरेस्ट रेट चेंज बाय RBI. How much and how quickly do you change your interest rate
as a banker in response to interest rate change by RBI is transmission mechanism of any country. So it is said that now things are in transmission in India, transmission is happening quickly, and that brings us with the hope that India will also have tightening of policy and inflation can be controlled in India quickly. Now, the survey further says that global cycle with global monetary tightening has dampened global outlook. Dampened global outlook का मतलब होता है कि जो ग्लोबल प्रोडक्शन है कि फ्यूचर में आउटपुट कितना बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ कितना होगा, उसे डैम्पन कर दिया. इकोनॉमिक सर्वे इज रिड्यूसिंग इट्स, आरबीआई इज रिड्यूसिंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, IMF is reducing growth expectation, World Bank is reducing growth expectation. Everybody knows that अभी monetary tightening हुई, सारे banks ने money supply कम किया जिससे कि interest rate बढ़ेगा. So there has been monetary tightening. All the banks have reduced money supply. Interest rate will go up, which will curtail the aggregate demand in the economy, defeating the whole idea of growth of GDP. लेकिन economic survey कहते हैं domestic appetite for credit has been on upswing. So credit growth, भले ही interest rate बढ़ रहा है, लेकिन credit growth in India has been rising, reflecting higher economic activity. जो credit growth है इंडिया में वो बढ़ रहा है, reflecting higher economic activity. That is what is happening. The credit growth in India has been rising, reflecting higher economic activity. And the scheduled commercial banks and non-banking financial companies have been growing in double digits, accompanied by clean balance sheets. अब ये समझना ये ज़रूरी है, ये जो clean balance sheets की बात है, this is less burden of NPA on banks. That banks earlier had their own distorted balance sheets. Now there is less burden of NPA on the banks. In fact, survey इस बात को highlight करते हैं कि देखो भाई दो अच्छी बात हो गई है देश में. एक, NPA of the banks has come down, which is good news for India. 5.1% is the gross non-performing asset now, which had reached 11% at a point of time of total loans extended. And even corporates which were heavily leveraged word जब भी देखो ये इसका मतलब होता है loans taken as a ratio of total capital. टोटल कैपिटल के मुकाबले क्या लोन आपने ले रखा है, तो अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हुआ तो ये खतरे की घंटी होती है. If there is more loan taken, if the leverage is high, that's danger signal. So now the leverage ratio is low, the loans taken as a ratio of capital is low, and the good news for us is that GNPA, the gross non-performing asset of the banks as a ratio of total loans extended, is low. Perfect. Good evening all of you joining me now. Great to see you all here. Now that is one part. This is again a good news on us. तो अब देखो interest rate बढ़ने के बाद भी अगर लोग ज़्यादा लोन ले रहे हैं तो वो positive signal of the economy show करता है. If in spite of interest rate people are taking more loan, that shows positive signal of the economy. और फिर economic survey बोलते हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था. The survey says that the GNPA, gross NPA, has fallen to a 7-year low of 5%. मैं आपको एक और बात ऐड कर देता हूं. Net NPA has fallen to a 10-year low of 1.8%. तो नेट एनपीए पिछले 10 साल में सबसे कम है और ग्रॉस एनपीए पिछले 7 साल में सबसे कम है. वो शो कर रहा है दैट इकोनॉमी इज नाउ कमिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन बैलेंस शीट डेफिसिट एंड द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इज 16%. ये जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है ये होता है टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल ऑफ द बैंक्स as a ratio of
रिस्क वेटेड असेट वैल्यू, कि बैंक के टोटल असेट की वैल्यूएशन रिस्क वेट के साथ, and tier 1 capital and tier 2 capital, the good quality capital reflecting there. अब दो चीज़ों पे दिख रहा है कि बैंकिंग सेक्टर और कैपिटल मार्केट अच्छा कर रहे हैं, एक इन गुड परफॉर्मेंस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, अनदर इन गुड परफॉर्मेंस ऑफ पेंशन सेक्टर. You know, the outreach of banks and outreach of firms is reflected in good synchronization of insurance sector and good synchronization with pension sector, कि इन सेक्टर्स में फंडिंग ज़्यादा जा रही है और वो शो कर रहा है that the outreach is comparatively much better at the moment. Vagish, I am answering your question. This synchronization will not have an effect on REIT or NEER directly, but the good part is that if our credit goes up along with interest rate and economic activities pick up, then we can be happy that we can expect our foreign exchange inflows to pick up again, and that can allow us to go much better, and REIT and NEER can show some positive trends up there. All right, then comes the next part, that is global central bank reaffirmed their hawkish stance, but RBI is still supporting growth, which will mean that there will be liquidity in financial sector. RBI का जो policy stance है, ये दिमाग में रखोगे prelims के point of view से, RBI का policy stance है withdrawal of accommodation, withdrawal of accommodation. मतलब RBI कह रहे हैं कि मैं मनी सप्लाई बढ़ाऊंगा, मैं आपको लिक्विडिटी दूंगा, लेकिन अभी मेरा ज़्यादा ध्यान इन्फ्लेशन कंट्रोल पे होगा. माई एक्टिविटी विल बी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, सो आई विल गिव यू मनी सप्लाई, I will provision you with liquidity, but inflation control is dominant in my mind. All right, that is the idea that RBI comes up with. So, as global central banks reaffirmed their hawkish stance का मतलब होता है liquidity will be provisioned to control inflation. Liquidity will be provisioned to control inflation even if it implies reducing growth. Liquidity will be provisioned to control inflation. Liquidity will be provisioned to control inflation even if it implies reducing growth. लिक्विडिटी जो दी जाएगी वो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए दी जाएगी, भले ही उसके चलते ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. सो लिक्विडिटी विल बी गिवन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन even if it implies reducing growth. So this is one thing that is hawkish stance, but RBI कहते हैं कि वो भी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे लेकिन अकोमोडेशन को विड्रॉ करेंगे. सबसे अच्छी बात है that our capital expenditure is strong. As we discussed in the fiscal policy chapter, we are spending 10 lakh crore rupees on capital expenditure. The macroeconomic fundamentals are strong, that is fiscal deficit, current account deficit, inflation, all of these are within range. Within range का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी हालत में है, within range का मतलब चिंताजनक नहीं है, difficult नहीं बता रहे. Current account deficit even at 4% of GDP will mean that we will have a $140 billion deficit on current account, and if we can get $100 billion FDI and another $10-20 billion FII inflow, then that will mean that the net balance of payment deficit will be $20 billion, which is not much given that we have a foreign exchange reserve of $560 billion. So that is why we are managing the things at the moment. Fiscal deficit, the glide path is clear. This year's fiscal deficit is lesser than last year. So markets cheer these news and then they react more positively. So that is the basic idea. Now, when we Vinod, repeat this question when I am discussing agriculture with you. Right now, if we discuss this, it will mean we are going in the digression form. तो तुम मुझे फिर से पूछना जब मैं तो agriculture पढ़ा रहा हूँ इसको. All right. Then
there is another thing that is, and that all that has led to more inflow of capital, making us realize the objective of अमृतकाल. जब मैं बजट पढ़ा रहा था तो मैं अमृतकाल की बात की थी मैंने तुम्हारे साथ, और 75th ईयर से 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तक में वी आर प्लानिंग टू अचीव दिस अमृतकाल. देन व्हाट आर द मॉनेटरी डेवलपमेंट्स. अब यहाँ से प्रीलिम्स की कहानियाँ शुरू होती हैं, आप ध्यान से सुनते रहेंगे. दैट फ्रॉम हियर वी बिगिन विद द प्रीलिम्स स्टोरी. जस्ट कीप लिसनिंग टू मी केयरफुली ऑन दिस. सो first things first, the first context is commodity prices were soaring, so global inflation. Why is there global inflation? क्यों देश दुनिया भर में inflation बढ़ा? पहला supply chain disruptions, और ये supply chain disruptions जैसे containers becoming costlier, उससे supply chain disruption हुआ, firms closing down, बहुत सारी कंपनीज ग्लोबल पैंडेमिक में बंद हो गई. अब वो बंद होने की वजह से डिसरप्शन हुआ. और रशिया यूक्रेन क्राइसिस. अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस तो बिल्कुल भयंकर नाच रहा है. क्यों नाच रहा है? एक तरफ ऑयल महंगा कर दिया, खाने की चीज़ें महंगी कर दी, फर्टिलाइज़र महंगा कर दिया, यूरोप में तबाही मचा दी, तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ. ये सारी चीज़ें एक साथ वज्रपात कहते हैं इसको. That many things happening together at the same time because of one event. So Russia-Ukraine war has meant that Europeans are in a crisis, or semi-crisis if I can say, and that means that they are not investing much and they are in their own troubles. They are not buying from us much. Don't forget that out of total exports of India, around 17% goes to Europe alone, and that means that they are not buying from us much. So our exports are taking a beating. Americans are involved in the war. They are not buying much. There our exports are taking a beating. Investments from these places are heavily coming to India. Unfortunately, due to the war, they don't have a surplus and investment is not coming to India. And then imports are becoming costlier for India because oil prices become costlier, crude oil I mean, then edible oil, wheat, other edible products, and then minerals and metals like steel, etc. So all these prices going up has been trouble for India. So ये एक major factor बना, और इंडिया के लिए तो बना ही, दुनिया भर के लिए बना. COVID-19 pandemic, what is the biggest problem of COVID-19 pandemic? Uncertainty. ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, पर सोचो अभी भी थोड़ी सर्दी खांसी होती है तो लगता है हो गया कोविड, फिर से लगता है. तो ये H3N2 आ गया आजकल तो नया मार्केट में. But if you look at this whole uncertainty part is the problem. Everybody is worried that what if it comes back? What if a bad variant comes? How will we respond? So right now also many people are taking things very slowly. Also remember, due to COVID pandemic, a lot of supply chains which had been created, for example, some company in Africa supplying some component to somebody in say India, and that company then producing something, supplying it to Britain, and that company producing something, supplying it back to India, and then India producing something, supplying it to all over the world. ये पूरा supply chain creation था. अब ये supply chain creation disrupted है क्योंकि हो सकता है जो पहली कंपनी मैंने बोली अफ्रीका में वो बंद हो गई, हो गया कल्याण वहीं पे. अब उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो, नया सिरे से प्रोड्यूस करो. साथ में कंट्रीज का एक दूसरे पे ट्रस्ट कम हो गया. अमेरिकन्स ने रशियंस को पनिश करने के लिए स्विफ्ट कैंसिल किया, उनको पनिश करने के लिए उनके डॉलर डिपॉजिट्स फ्रीज कर लिए. तो बाकी कंट्रीज जो अमेरिका से अलग है उनको डर लगा कि भाई हम इनके अलाइज, इंडिया इज वन ऑफ देम, दैट इफ वी आर नॉट देयर अलाइज एंड टुमारो दे गो अगेंस्ट अस, व्हाट विल वी डू? सो एवरीबडी इज डीकपलिंग. Everybody is trying to develop their own currency distributions. Everybody is trying to develop their own channels of growth. Gold is becoming costlier because of that. So, that is the disruption. And then, of course, the zero COVID policy that the Chinese were obsessed with till very late. वो तो जनवरी में उनका चाइनीज न्यू ईयर आता है, दिसंबर जनवरी में, तो वो चाइनीज न्यू ईयर के नाम पर जीरो कोविड को थोड़ा रिलैक्स किया है थैंकफुली, और उसके बाद से ज़बरदस्त सर्ज हुआ कोविड का उनके यहाँ क्योंकि उनकी पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड थी नहीं. नाउ चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स टू द वर्ल्ड. गिवन दैट चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स टू द वर्ल्ड, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम because now if China is closed and China is disrupted, we are all in trouble. और इसीलिए ये अच्छी बात भी हुई एक तरह से. ये वैसे कोई अच्छी बात नहीं हुई दुनिया के लिए, बट एक बात हुई दैट दुनिया को ये सबक मिला दैट यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. Everybody had put things in China, expecting that okay, Chinese will keep growing and Chinese will keep producing manufacturing and Chinese will be cheaper and we'll keep buying from China and we'll all grow. Thankfully now that will take some अंडरस्टैंडिंग. लोगों के समझ में आएगा कि नहीं, ये सही पॉलिसी नहीं है, थोड़ा इससे हम
इंप्रूवमेंट की तरफ चलें। बट दीज आर द रीजंस फॉर ग्लोबल इन्फ्लेशन। तो कोई अगर आपसे पूछेंगे व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्लोबल इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, कोविड पैंडेमिक एंड लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस इन चाइना। सो what has been the responses? As I told you, monetary policy has hiked rate। अब सर्वे दिसंबर तक का दे रहे थे डेटा, मैंने आपको पहले ही फरवरी तक का दे दिया है कि अब ये हो गया है 250 बेसिस पॉइंट्स। तो ये बात हम लोग कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट नाउ इट इज 250 बेसिस पॉइंट्स दैट इट हैज इंक्रीज्ड। ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट accommodative will be focused on withdrawal of accommodation। ये कहानी भी मैं आपको सुना चुका हूं कि ग्रोथ को सपोर्ट तो करेंगे बट देयर विल बी विड्रॉल ऑफ accommodation। रिजर्व मनी का मतलब होता है बेस मनी, और बेस मनी का मतलब होता है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विथ आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। तो ये रिजर्व मनी का मतलब है। अगेन मैं जानबूझ के इन डेफिनेशंस में डिटेल में नहीं जा रहा, ये तो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आप लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, ज्ञानी लोग हो, तो ये बात जानते होगे। तो रिजर्व मनी ये हो गया, बेस मनी, हाई पावर्ड मनी, ये सब इसी को कहते हैं। और ये बढ़ रहा है एट 10.3% ईयर ऑन ईयर, जबकि ब्रॉड मनी बढ़ रहा है 8.7%। तो इसका मतलब है कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो ब्रॉडली 1 के ऊपर रहा, मेनली स्टेबल रहा। अगेन तुम्हारे काम की क्या बात है यहाँ, दैट द मनी मल्टीप्लायर रिमेन्ड स्टेबल। द रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी टू रिजर्व मनी हैज बीन स्टेबल, सो मनी मल्टीप्लायर रिमेन्ड स्टेबल। तुम्हारे बात को बस इतना ही जानना है तुम्हें, नथिंग एल्स। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज what is the liquidity condition? So liquidity condition is that there is surplus liquidity due post COVID due to conventional non-conventional policy। conventional policy क्या था, रेपो रेट कम किए, CRR कम किए, ये conventional policies से कोविड पैंडेमिक के समय लिक्विडिटी बढ़ाने की बात थी। So increasing liquidity during COVID pandemic through conventional policy was reducing repo rate, reducing CRR, and then there were non-conventional policies like emergency credit line guarantee scheme, long-term repo operations, targeted long-term repo operations, fund of fund schemes. So there were several schemes by which liquidity was being arranged, both conventional and non-conventional. Now what are the responses post-COVID? Withdrawal of accommodation. MSF rate has been kept above policy rate by 25 basis points and 250 basis points above increment in the repo rate। इनके अलावा इसमें एक और बात की गई है, क्या बात की गई है, CRR बढ़ा दिया गया है, So apart from this, what has been done is that CRR has been increased by 50 basis points and sorry, with increase in repo with increase in repo, we have seen that overall the yields are firming up। ट्रेजरी बिल के yields हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के yield हो, कमर्शियल पेपर्स के yield हो, इंटरेस्ट रेट इंडिया में बढ़ने लग गए हैं। सो what is noticed is a steady increase in interest rate on all financial assets, reflecting a tighter monetary condition, steady increase in interest rate on all financial assets reflecting a tighter monetary condition. All right, so that is another factor that has come in over here. Now, apart from that, if we go further, the monetary policy transmission, if we see, which I was telling you, so the monetary policy condition is showing some good transmission. The transmissions are happening quickly. The external benchmark lending rate increased by 250 basis points now. This external benchmark base is mainly the repo rate, and that has gone up by 250 basis points. So that is reflecting some improvement now in overall monetary system. Some improvement now, some transmission mechanism. The idea is that over a period inflation will be controlled. अगले चैप्टर में मैं तुमसे इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा, बट अगर तुम हाल फिलहाल के डेटा को देख रहे हो तो देखोगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स वापस 4%, 3%
15 महीने का लोएस्ट, 2 साल का लोएस्ट, ये फिगर्स तुम्हें दिखने लगेंगे वापस। क्यों? क्योंकि जैसे मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, पहले इनपुट के प्राइसेस गिरते हैं और इनपुट्स जो हैं वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में ज़्यादा रिप्रेजेंटेड है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स गिर रहा है ऑलरेडी इंडिया में, उसकी वैल्यू कम हो रही है, और जब भी होलसेल प्राइस इंडेक्स कम होता है तो ओवर अ पीरियड सीपीआई भी नीचे आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी नीचे आएगा, उतना नहीं जितना एसडब्ल्यूपीआई आया, लेकिन नीचे आएगा। सो वी कैन यूज दैट टू प्रिडिक्ट दैट सिंस डब्ल्यूपीआई इज कमिंग डाउन, एंड डब्ल्यूपीआई इज काइंड ऑफ हार्बिंगर टू सीपीआई। जो डब्ल्यूपीआई करता है कुछ दिन बाद सीपीआई फॉलो करता है। अगर तुम्हें याद हो, when inflation started picking up, WPI started breaching 12%, 14%, and then CPI went up to 8%, 8.5%. So similarly, WPI has now come down to 4%, 3%. CPI will also come down to 5%, 5.5%. But chances that we will have inflation lesser than 4% in near future, and by near future I mean at least 1.5 years, I suspect that that will happen. I always say that, many of you would have heard me in the classroom saying this, that the days of low inflation are now, I think, at least for few years gone. We will not have those 0% inflation and 2% inflation days, and for 3 reasons. Reason 1, the world is now going to cleaner technology. Cleaner technology in the short run will be costlier. Reason 2, the world is deglobalizing. China +1, every country developing its own program, India going for Atmanirbhar. So in the short run again, even if they develop economies of scale and become cheaper in the long run, in the short run at least we are certain that that will put a pressure on the countries, and that will mean that, that inflation will rise, because not the least cost producer is producing anymore. And the third reason that it will happen is because globally we see that supply chains are disrupted now, and people are not yet going back to those old supply chains. Also, we see that countries don't have confidence in each other. Currency devaluation is happening at a fast pace compared to dollar, and all these are inflation generating things. So overall, if you ask me, then aging of the world is happening, because we are getting now demographically older, and that will again mean productivity can be a little difficult. Mechanization is rising, which will mean in the short run the price will go up. So there are factors, but mainly if you ask me, deglobalization, shift to clean energy, and aging of the world, demography, they will all have their own role in making inflation not go down very soon. And then of course the other things like lack of faith among countries, devaluation of currency, all this will also have its own role. तो ये अब मुझे ऐसा लगता है, ईश्वर करे मैं गलत हो जाऊं, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूं, मैं तो चाहता हूं प्राइस कम रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 2%, 3% प्राइस का ज़माना था, वो लौटकर कम से कम अगले 10 साल तो नहीं आने वाला. Next 8-10 years, the world will have, or maybe at least 7-8 years, the world will have inflation at some level. My projection says around 15-20 years, but let's hope that a green hydrogen breaks in, or some electric vehicle breaks in, some new technology happens, some invention happens, which can reduce cost of production. But right now, if you see overall, it doesn't look like so. Also, the world has reached a plateau of 4th industrial revolution. So now, if you look at the last major invention that we saw, was something like a smartphone. अब चैट जीपीटी को लेके बहुत हंगामा है, बट अगर आप देखें तो डिजेनरेटिव एआई बहुत दिनों से बात चल रही है. तो डिजेनरेटिव एआई एक नई चीज नहीं है, पुरानी चीज का एक जबरदस्त नया पॉपुलर रूप है. जैसे मान लो मैं बहुत दिनों से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, अचानक आके इकोनॉमिक्स पे एक पिक्चर बनाऊँ, फेमस हो जाऊँ, विभास सर डायरेक्टिंग करते हैं मूवी की, लेकिन वो काम 25 साल से चल रहा होगा. तो वैसे ही डिजेनरेटिव एआई है. डिजेनरेटिव एआई नया टेक्निक नहीं है, ये चैट जीपीटी एक नई चीज़ निकल के आई, तो लोगों को लग रहा है अच्छा ये तो कोई नई बात आई है. तो इसीलिए नई चीज़ स्मार्टफोन था, कि पहले जो फ़ोन्स थे उनसे बिल्कुल अलग. तो उस तरह से अगर देखो तो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है ग्लोबली. सो ऑल दीज विल बी इन्फ्लेशन पुशिंग इन नेचर फॉर दिस. Then it means that the next part comes, the yield on 10-year government bond rose, which means increase in long-term loans. कि जो लॉन्ग टर्म के एसेट्स हैं वो भी उनके भी यील्ड बढ़ रहे हैं. सो यील्ड सप्लाई रिफ्लेक्ट्स अनसर्टेनिटी इन क्रूड ऑयल प्राइसेस. ये यील्ड स्पाइक का मतलब होता है बॉन्ड प्राइस फॉलिंग एंड लिक्विडिटी रिड्यूस्ड. तो हम ये जो रीजंस हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे,
that why are GSEC bond yields rising? So one is uncertainty in crude oil price. We all are worried that crude oil will keep rising in value because of supply disruption and because of demand pulling back. Chinese are now coming back in picture. India is reviving. So demand will pull back. So that is one factor. Hawkish stance of major central banks. Interest rate is increased by many central banks. And that means Indian interest rate will also remain high. And then hardening of global bond yield. Globally जब हर जगह बॉन्ड यील्ड हार्डन हो रहा है तो इंडिया के जीसेक उससे डीकपल्ड नहीं रह सकते, डिवॉल्व्ड नहीं रह सकते, वो भी बढ़ेंगे ही वैल्यू में. एंड देन प्रेशर ऑन द रूपी टू डेप्रिशिएट. अगर हमारे यील्ड नहीं बढ़े, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा तो हमारे यहाँ से पैसे निकल के यूएस चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी. इसीलिए हमारी यील्ड को भी बढ़ना पड़ रहा है. आरबीआई भी लिक्विडिटी टाइटन कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं. So if yield doesn't rise in India, if interest rates don't rise in India, India will lose investment, and that will mean India's currency will depreciate and our imports will become costlier, in turn making it worse for us. So that is why in India yield is being increased. RBI is tightening money supply to improve that situation. In this context, it will be difficult, Akash, about bond price and interest rate. And similarly, SVB bank issue is a very separate issue. I will try building a new video for you on SVB bank issue for 10-15 minutes. But right now the problem is that SVB bank had taken a lot of bonds, and due to liquidity crisis, the bond prices have gone down. And now to pay back their depositors, they had to sell that bond incurring a loss. And since they incurred a loss, after a point they were in no position to honor their commitment to their depositors. So to some extent, Akash, I hope this discussion helps you. All right. Then if you see the GSEC yields that we see, that जब oil prices गिरते हैं तो ये देखिए GSEC yield नीचे आ जाता है, और जब oil prices ऊपर जाते हैं ये GSEC yield ऊपर चला जाता है. तो ये बात हमें समझनी है कि GSEC yield जो है ये closely connected है with the oil price. The GSEC yield is closely connected with oil price. इस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे हम देखते हैं GSEC yields और bond yields जो हैं वो ऑयल प्राइस के साथ बहुत ज़बरदस्त रूप से कनेक्टेड रहते हैं, कि अगर ये GSEC yield बढ़ा, जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़े ये बढ़ते हैं और फिर कम होते हैं. तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज व्हाट वी सी. सो दैट इज द अनसर्टेनिटी एस्पेक्ट दैट आई वाज डिस्कसिंग विथ यू. Then we come to banking sector. Again, in banking sector there are 2-3 things which we need to keep in mind. Good evening all of you joining me now. नो नीर एंड रीर को यहाँ क्यों लेकर आओगे मिसमेरिक, क्या नाम रखा तुमने, ठीक है. सो नीर और रीर को मत लेकर आओ. हाँ ये कह सकते हो, इफ यू वांट यू कैन से दैट इन केस यू हैव एन इम्प्रूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट देन यू कैन स्टॉप द फॉल इन नीर. आप करेंसी डेप्रिसिएशन को रोक सकते हो. दैट इज समथिंग यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस. नाउ the economic survey claims that there is steady improvement in asset quality and strengthening of balance sheet, that is reduced NPA. Steady improvement in asset quality and strengthening of balance sheet. Reduced NPA plus reduced threat of default. जब आप कहते हो asset quality better है, इसका मतलब होता है लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता ही रहा था कि बैंक के CRAR 16% के ऊपर हैं, which is very healthy. I mean the norms in India are to keep them above 9% and a buffer ratio of 2.5%. The average is more than 16%, which is doing quite well in India if you look at. And then resilient and well capitalized banking sector, as I told you, the capital adequacy ratio is doing well. And then they say this is because of, I mean the whole thing is happening because of strengthened regulatory and supervisory framework, that is asset quality review by RBI. अगर कोई पूछे कौन से supervisory framework, prompt corrective action by RBI. तो इन सब के वजह से आज के डेट में फ्रेमवर्क मच बेटर है. और साथ में एक और कारण है, implementation of 4R approach, recognition, that is identifying NPA,
resolution, that is taking it to insolvency and bankruptcy board for resolution. Recapitalization, this is infusing capital in banks. And reforms, which is the missing link if you ask me in India. Banking reform, सर्वे ने बड़े आराम से क्लेम कर दिया कि बैंकिंग रिफॉर्म हो रहे हैं, बट मेरे हिसाब से बैंकिंग रिफॉर्म नहीं हुए इंडिया में ठीक से. मैक्सिमम जो हमें नज़र आया है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज ब्यूरो टू हैव सम ऑटोनॉमी इन अपॉइंटमेंट ऑफ financial institutions controlled by the government. But otherwise, banking reforms, if you ask me, is a missing link. I think we can do much better on banking reform as compared to what we have done till now. So one banking reform that we can do is, at least what we can do is we can reduce the number of public sector banks. Also what we can do is we can convert, there can be one institution, this is P. Nayak committee report, that there can be one institution where all government shares in public sector banks can be transferred. Let this institution be managed by professionals and let them take the responsibility of managing all public sector banks. So this, if we can do, I think we are again better off. Apart from that, of course, as I told you, capital adequacy ratio of commercial banks have been rising. 16.6% is where we see it now. Credit growth improvement we have discussed. These are the reasons of credit growth development. So one is aided by sound banking system, including digital banking. Sound banking system including digital banking. तो एक तो ये कारण रहा कि क्रेडिट ग्रोथ हमारे यहाँ थोड़ा फास्ट हो रहा है. दूसरा कारण ये रहा that there is a deleveraged corporate sector, that is, now there are less loan burden of loan on corporates. एक डेटा हमारा ये कहता है that corporate deleveraging has been by 30%. जितने लोन में कॉर्पोरेट सेक्टर पहले थे उसके मुकाबले 30% लोन जो है वो कम हो गया है. So corporate deleveraging has been up to 30%. And then non-food based credit growth has been in double digits. ये non-food based credit growth का मतलब है वो क्रेडिट ग्रोथ जो फूड ग्रेन खरीदने के काम में या फूड ग्रेन की ट्रेडिंग के काम में नहीं आ रहा. So non-food credit growth based credit growth has been in double digits since April. उसके अलावा जो एक और बात हमें देखने को मिल रही है that एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में ग्रोथ दिखा, इंडस्ट्री में, सर्विस में, पर्सनल लोन्स में. तभी मैंने आपको लिख के दिया, सर्वे ये कहते हैं that there is broad based growth in non-sectoral food credit. This shows all round pickup in credit and that reflects rising economic activities. And if you see, the growth rate even in the third quarter has slipped, but has slipped to around 4.5%, which shows that overall India's growth rate will remain around 6.5–7% this year, which is not a bad situation to go by. Then, if we look at another thing, this is another positive news, that non-banking financial companies continue to recover. Non-banking financial companies are those which are finance oriented companies registered not under Banking Act but under Companies Act, and not all of them have the freedom to take deposits from borrower. Their business model is they issue bonds in the market or they issue certificates in the market, take loans from the public sector banks, take loans from public through bonds, and then use that money to give loan to other sectors like MSME, automobile, textile, leather goods, footwear, etc., and then earn revenue and earn profit out of that. So NBFC are a very big zone by which Indian development process can be observed, because if NBFCs are doing well, then that means
that Indian overall system is doing well. In fact, in 2018, when things were going from bad to worse, IL&FS had collapsed, which was an NBFC, and looking at IL&FS collapse, practically all NBFCs were not getting loans. So today, if you ask me, we are in a much better zone, and that is reflected in credit dispersed by NBFC is rising, their gross NPA ratio is declining, their asset quality is improving, and there is a recoupling. That is, recoupling मतलब वापस एक साथ आ रहे हैं कि उनके asset position अच्छा हो रहा है और उनका return on capital अच्छा हो रहा है. मतलब NBFC की जो health खराब हो रही थी वो अब वापस ठीक होने लग गई है. The health of NBFC, which was going from bad to worse, is now coming back on track. So that is again a thing that we can keep in mind, that NBFCs are helping us to that extent. The next thing that comes up is that what are the progresses made under IBC? Insolvency and Bankruptcy Act के passage होने के बाद, Insolvency and Bankruptcy Act के pass करने के बाद क्या क्या benefits मिले? तो पहला, ease of doing business improves because of facilitating the process of exit. Ease of doing business improves because of process of facilitating exit. तो एक तो हमने exit process को facilitate किया, ease of doing business improve किया, क्योंकि firms के लिए uncertainty कम की. If the exit laws are good, then the firms have a much better position for themselves. Then of course there was behavioral change, that is business relationships are recoded, firms start avoiding willful default and it helps the banks to remain robust. Firms start avoiding willful default and it helps the banks to remain robust. That is the idea कि firms जो हैं वो willful default, ये है recoding business relationships कि अब नए सिरे से business relationships बनने लगे हैं, firm avoid नहीं करते, अब default करना avoid करते हैं, banks को भरोसा बढ़ गया है और firms का आपस में भरोसा बढ़ गया है. The firms trust each other better for growth in this sector. Other benefits are that 69% of distressed assets are rescued and realization of value around 178% of the liquidation value. जितनी वैल्यू लगाई गई थी कि अगर कंपनी को लिक्विडेट करेंगे तो पैसे मिलेंगे, उससे 178% ज़्यादा मिले, ये एक अचीवमेंट है. और 69% हमारा डिस्ट्रेस्ड एसेट रेस्क्यू के कर लिए गए हैं, ये एक अचीवमेंट है. 100 rupees वर लॉस्ट, द 69 rupees हैव बीन रेस्क्यूड वन वे और द अदर. And 92% values have been realized under liquidation process. इसमें एक चीज़ है, 33% of default has been recovered but the number is low because many of these loans are very old loans. So 33% of default has been resolved, but the number is low because many of these loans are very old loans. तो old loans होने की वजह से क्या था? The collateral value had become minuscule. तो इनकी recovery बहुत मुश्किल थी. इनके जो कोलैटरल थे वो भी अब हालत ख़राब थी उनकी. लोन्स 10 साल पुराने, 12 साल पुराने, तो इनकी रिकवरी 5% हुई, 4% हुई. इसीलिए एवरेज जो है वो 33% है. रिटर्न ऑन असेट मीन्स द प्रॉफिट यू अर्न कंपेयर्ड टू द असेट दैट यू हैव इन्वेस्टेड. ऑलराइट. देन IBC has recovered the highest amount for scheduled commercial bank. जितने भी रूल बने थे आज तक, ये 33% is quite a record breaking number if you ask me. आज तक इंडिया कभी भी 13% से ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाता था, सारफेसी के बाद भी. और एक ज़माना तो ऐसा था कि 8 से 10 साल लगते थे रिकवरी में. IBC ने क्या किया? एक तो 33% रिकवरी ऑलरेडी हो गई, जबकि मैंने आपको बताया ये दिक्कत है
कि ओल्ड लोन्स को रिकवर किया करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोलैटरल की भी हालत ख़राब है। दूसरा, द टाइम पीरियड ऑफ रिकवरी आफ्टर IBC टाइम पीरियड हैज़ नाउ कम टू लेस दैन 2 years एज रिपोर्टेड बाय इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं कि ये 530 दिनों का नॉर्मल एवरेज टाइम है रिकवरी का। तो 530 दिनों का मतलब अब 2 साल से भी कम हो गया रिकवरी का टाइम, रिजोल्यूशन का टाइम, आई एम सॉरी। सो द टाइम पीरियड फॉर रिजोल्यूशन ऑफ लोन विच यूज्ड टू बी 8 years to 10 years in India is now around 2 months odd, the 1.5 year odd in India. It's a big achievement. Other good achievement is this is rising. This is showing a positive trend. So we can hope that in future we can do better. Then of course capital market development में एक बात ध्यान क्या रखना है कि जो इक्विटी मार्केट है वहाँ पहली बार SMEs आ रहे हैं और फंड मोबिलाइज कर रहे हैं। भले ही फंड मोबिलाइजेशन हैज़ बीन लैकलस्टर, बहुत पैसे नहीं आ रहे लेकिन नए SMEs आके फंड मोबिलाइज जरूर करना चाह रहे हैं। इट्स अ न्यू थिंग इन इंडिया दैट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो टैपिंग द शेयर मार्केट टू गेट फंड्स। इसमें एक काम आ रहा है RBI का फंड ऑफ फंड। RBI has created a fund of 10,000 crore rupees to give the benefit of underwriting to SMEs, small and medium enterprises. तो ये 10,000 करोड़ से वो अंडरराइट करते हैं, गारंटी देते हैं कि अगर कोई नहीं खरीदेगा इस शेयर को तो हम खरीद लेंगे। So with this 10,000 crore they give a guarantee that if nobody buys this share, we'll buy it. So you know what happens is this encourages many SMEs to come up with their initial public offers, and again even though the amount generated has not been very high, but the number of participants has been quite good, which is very nice. You know what it shows? That SMEs are trying to reduce their dependence on unorganized sector borrowing from money lenders and all, from committee system and all, and trying to tap the formal market to get loans. So that's good news in one sense. Another is that there has been a largest IPO ever in history of India, LIC's IPO, where government disinvested 3.5% in LIC, generating close to 20,000 crore rupees in return. And this has been the largest IPO India has ever seen. It's another matter that LIC share buyers are at the moment not in a happy mood. But overall, if you ask me, LIC is a good share to buy, and maybe in the next couple of years, as the markets pick up and as LIC gets its house in order a little more by being more transparent, investing in better assets, creating better return on the investments they are making, their share value will pick up. It's a robust company, large company, very huge market credentials. That share value will pick up over a period. Now, the next thing we see apart from that, in case of debt, we have seen that public debt issuances has been uncertain, has been less, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, ये थोड़ा रुक के अब पब्लिक डेट के लिए जा रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट को कम किया जा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट डेट प्लेसमेंट्स हैं वो हाई है। द प्राइवेट डेट प्लेसमेंट हैज़ इंक्रीज बाई 11%, रिसोर्स मोबिलाइज डिक्रीज बाई 6%। ये तुम्हारे लिए ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा है और प्रीलिम्स में क्या करेंगे, ऐसा एक स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई प्राइवेट डेट प्लेसमेंट हाई है या पब्लिक डेट प्लेसमेंट हाई है। तो प्राइवेट डेट प्लेसमेंट बढ़ रहा है और पब्लिक डेट प्लेसमेंट इस साल थोड़ा कम रहा है, इसको दिमाग में रखना है। टोटल इंडिया में अगर पूछें लोन कौन ज़्यादा लेता है, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा लेता है। टोटल फॉरेन लोन कौन ज़्यादा लेता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा लेता है। तो ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखोगे, इट विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एग्जाम। जो मैंने अभी कहा हो सके तो वापस रिपीट मोड पे सुन लेना, लेकिन याद रखना इन ट्रेंड्स को, ये पूछते हैं एग्जाम में आपसे। देन देयर इज समथिंग विच सेज दैट what is the problem in the debt market? Why do we see this kind of a thing happening in the debt market? So these things are happening in the debt market because there is global macroeconomic uncertainty. There is unprecedented inflation which reduces real returns. So people are not willing to buy debt. Uncertainty means risk is high. So high risk, nobody wants to again give you loan. Monetary tightening again means liquidity is reduced, and that again means that you are not easily getting loans in the market. Volatile markets again relate to uncertainty. The hurt investors' resistance is that investors sometimes feel, this is actually resistance to invest
इतने पैसे डूबे लोगों के कोविड पैंडेमिक में और फिर रशिया यूक्रेन वॉर में कि लोगों ने कान पकड़ लिया कि अब इसको नहीं खरीदेंगे। क्यों डूबे समझना। अब ये जो एसवीबी पे मुझसे सवाल पूछ रहे थे उसका एक आधा आंसर तो मिल जाएगा। जब कोविड पैंडेमिक आया तो पैसे की बरसात हुई। पैसे की बरसात कहाँ से हुई? अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने बोला मैं प्रिंट करूंगा, आरबीआई ने बोले मैं भी इजी लिक्विडिटी, यूरोपियन बैंक ने बोला मैं भी इजी लिक्विडिटी, तो अच्छी बरसात हो गई पैसे की। अब ये बरसात कहाँ कहाँ जाएगी? शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में। बॉन्ड मार्केट को पकड़ते हैं, क्या होगा? People will buy more bonds. So what will happen to bond price? They will rise. Looking at them rise, more people will buy it. They will rise more. Looking at them rise, more people will buy it. They will rise more. So bond prices are rising and bond yield will be falling because of that. Life looks nice. But then happens COVID pandemic withdrawal, supply chain disruption, and due to this easy money, demand has picked up. But supply is not there to meet the requirement. Then Russia-Ukraine war happens, oil becomes costlier, the Saudis don't listen to the Americans for a long time in the recent past, and therefore the oil prices start rising. And now that means your metal prices are high, oil prices are high, minerals are high, food prices high, and all that now means high inflation, forcing the central banks all over the world to control liquidity, withdraw the surplus money they had given. Now the interest rate starts rising, which means liquidity is in shortage. People start selling bonds to get liquidity. As people sell bonds, bond prices collapse, and that's investors' loss. कि ये जो बॉन्ड प्राइस कोलैप्स हुआ ये इन्वेस्टर का लॉस है। एसवीबी बैंक में क्या हुआ? जो सिलिकॉन वैली बैंक में उन लोगों के पास स्टार्टअप्स के डिपॉजिट्स थे, उनके पास नए फर्म्स के डिपॉजिट्स थे, टेक कंपनीज के डिपॉजिट्स थे। अब ये स्लो डाउन भी सबसे ज़्यादा किसे हर्ट कर रहा है? टेक कंपनीज को, स्टार्टअप्स को। तो इनको क्या चाहिए था? पैसे। कहाँ से मांगेंगे? अपने डिपॉजिट विड्रॉ करेंगे। ये गए डिपॉजिट विड्रॉ करने। अब बैंक की हालत थोड़ी बुरी हो गई क्योंकि ये डिपॉजिट के पैसे तो ये बॉन्ड में लगा चुके थे और उस बॉन्ड की वैल्यू गिर गई थी, लेकिन डिपॉजिट तो देना पड़ेगा जब लोग मांगने आए हैं। तो दिए डिपॉजिट के पैसे, कहाँ से देंगे? बॉन्ड बेचकर। अब ये बॉन्ड बेचे, बॉन्ड की वैल्यू और गिरेगी। लेकिन अब ये जो बॉन्ड बेचे और नुकसान खाए, इसकी खबर मार्केट में फैलती है, बाकी के टेक स्टार्टअप्स गड़बड़ में जाते हैं, दूसरे फॉरेन कंपनीज परेशान होते हैं, कहते ये बैंक पक्का डूबेगा, चलो सब लोग अपने पैसे मांगे। सब लोग पैसे मांगने जाएंगे तो अच्छे से अच्छा बैंक डूब जाएगा। बेचारे डूब गए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ एसवीबी इफ यू आस्क मी। शॉर्ट में सुना रहा हूँ बहुत, पर मुझे उम्मीद है इतना यूजफुल तो होगा कि तुम अब अखबार समझ जाओगे जो सच बातें वो लोग लिखते हैं। Now coming to this, क्योंकि अभी बहुत बात चलेगी American capitalism and all that story, so I'm used to it. You also get used to it. Some people will have a field, saying, "Oh, look, this is capitalism's greed. This is what these guys do," and that's true. Capitalism is greedy, and those guys look after profit. But SVB is not about capitalism's greed. It's more about a sudden situation in the market and a bank not prepared for it at all, because the bank did not know that my central bank will increase money supply by a record amount for 3 years and suddenly within 1 year wipe out all that money from the market. That's for nobody to predict. So that's very difficult at times. All right. And then of course the downbeat performance, that is low returns. जब भी investors panic करते हैं, capital market downbeat performance दिखाती हैं. So there is low returns by the investors. Now in the secondary market होता है where trading takes place after initial offer. Initial offer, जैसे पहली बार आपने अपना एक initial public offer निकाला या private placement किया, मुझे अपने शेयर बेच दिए या बॉन्ड बेच दिए। अब अगर मुझसे कोई खरीदता है उसे, तो वो सेकेंडरी मार्केट। उसमें हमने ये देखा that stock market performance in India has been witnessing a resilient performance mainly due to domestic participation. भारत में फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है। ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आप देखते होंगे, म्यूचुअल फंड सही है। So mainly due to domestic participation, formalization of domestic market and money infused by RBI. So and then India is not over indebted. तो बहुत सारी कंपनीज अब डीलिवरेज्ड हैं। तो इस मामले में हम एक लकी जोन में हैं। सोचो अगर अभी हमारी कंपनीज पे बड़े लोन का बर्डन होता, हमारे बैंक पे एनपीए का बर्डन होता, तो हमारा धराशायी हो जाते, हम क्वैक हो जाता। But thankfully our banks are deleveraged, our companies are deleveraged, which implies that
Globally, people are in trouble, but people are confident about India. You would have seen Rajiv Chandrasekhar ji, the Minister of IT, he had been saying on television that if people want, they can come and invest in India. Our banks are doing fine, nothing will collapse. In fact, in today's newspaper, you would have seen that many people are now going to Gift City to deposit their money over there, withdrawing it from America, believing India is a safer place. मैं अपने जीवन में ये देखूंगा कि लोग अमेरिका से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं सेफ्टी के लिए और भारत ला रहे हैं, धन्य हो गया प्रभु में। तो मैंने सोचा नहीं था। एंड एज अ यू नो मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट विच आई थिंक आई एम, इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मैं सपने में भी नहीं सोच पाता था कि ये होगा कभी। तो चलिए ईश्वर क्या क्या दिन दिखाते हैं। Now India's volatile index witnessed a declining trend, that is volatility in India is low, it has not been fluctuating a lot, and mutual funds witnessed lower net inflows, but over lower net inflows because of people having less income due to the liquidity crisis, less liquidity due to the liquidity shortage. तो म्यूचुअल फंड में लेस इनफ्लो का वो एक बहुत बड़ा कारण था। ऑल राइट, ओके परफेक्ट, ऑल राइट, लेट्स सी दिस नाउ। ये एक मैंने तुमसे शेयर किया है, ये इसे पढ़ लेना बस, इसके ये पीडीएफ में तुमसे शेयर कर लूँगा, इसको देख लेना। ये बताता है कि कैसे इंडिया के जो परसेंटेज चेंजेस हैं, वेदर इट इज़ निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स इज़ डूइंग मच बेटर देन मेनी अदर कंट्रीज, यू नो। बट एक बात और इसमें ध्यान में रखना कि ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं, यू नो, दीज रिटर्न्स दैट वी सी are showing much more promising numbers than any of these. So all the major markets are showing negative returns except for Indian market which is going to show a positive return. तो ये कितना बस दिमाग में रखना, nothing more than that. ये बस एक तुमसे शेयर भी कर लूँगा मैं। अब FPI flow इंडिया में अगर उसकी बात करें, that how FPI flow is happening in India and how we expect that to do things for us. So strong macroeconomic fundamentals have ensured that India remains an active destination. यही बात अभी तुमसे कर रहा था, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में, इन्फ्लेशन उतनी हाई नहीं। इन्फ्लेशन की बात पिछले क्लास से भी रिलेट करना, जब मैंने कहा था कि अमेरिका का इन्फ्लेशन अगर 8% पे है, इफ अमेरिकन इन्फ्लेशन इज एट 8%, देन इट इज 4% मोर देन देयर मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल। Our inflation at 8% is only 2% more than our maximum tolerance level. So if Indian inflation is at 5%, that means we are just 1% above our maximum tolerance level, we are 1% below our maximum tolerance level, which sounds quite okay. But American inflation at 5% will mean they are still 1% above their maximum tolerance level. So that ways our macroeconomic fundamentals look okay. Fiscal deficit has shown a declining trend and growth has been quite robust till now. Another is, they say that insurance sector development has happened, you know. तो यहाँ पे schemes हैं जिनकी बात की है इकोनॉमिक सर्वे ने, और आप इन schemes को एक बार जनरल रीड कर लेंगे अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज़ आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ केयर स्कीम, सुरक्षा बीमा योजना, एक्सीडेंटल केयर स्कीम, जीवन ज्योति बीमा योजना, लाइफ इंश्योरेंस, और इन सब को सरकार ने मेनली टारगेट किया है फॉर पीपल हु आर ऑन द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। And similarly, Fasal Bima Yojana for agricultural, insurance. So this is about giving people credibility. In insurance schemes का purpose ये है कि लोगों को credibility मिले, लोगों को risk लेने की capacity मिले. If people can take small risks, if people can believe that they are also secured, then that will give them ease of living. And that will allow them to grow faster, because small risks are needed to be taken to have high returns. So insurance schemes are playing a big role in India in that context. एक term तुम देखोगे, insurance density. Economic survey ये term use करते हैं, insurance density. ये insurance density होता है premium paid, कितनी इंश्योरेंस के लिए टोटल प्रीमियम पे की गई देश भर में, प्रीमियम पेड टोटल इन द कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यू नो। तो ये है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंडिया की इंश्योरेंस डेंसिटी 2001 के कंपैरिजन में आज 4 टाइम्स ज़्यादा है, जो कि एक ग्रोइंग इंश्योरेंस सेक्टर दिखा रहा है। एज कंपेयर टू 2001, India's insurance density is around 4 times more, which is showing a growing insurance sector. और एक और term देखोगे, insurance penetration.
ये भी इंडिया में 4 टाइम्स बढ़ा है। दिस इज इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल अगेन गिवन एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी। यू नो कि अपने जीडीपी के मुकाबले इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे बढ़ रहा है, तो ये भी देखा गया है कि भारत में बढ़ता जा रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स regarding the different insurance schemes, it is also these insurance density and insurance penetration which is rising in India, which is also doing some good results for our country. And then of course the pension sector is also showing a good return, that is PFRDA, the new pension scheme, Atal Pension Yojana, these are again showing some better returns for us over the period. Especially, you know, the Atal Pension Yojana is targeting the poor. PFRDA is with respect to new pension scheme, expecting the people to develop things. आपके काफ़ी मैसेजेस मुझे मिलते हैं अबाउट ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम डेवलपमेंट, तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा. आई एम प्लानिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन इट फॉर 20 minutes टू टेल यू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम. Then, you know, another thing is when you say insurance sector plus pension sector are those which collect long-term savings 25 to 30 years which is very favorable for financing long-term investment like infrastructure, housing, large scale industries, etc. You know that housing, infrastructure, large scale industries, all these are quite favorable for financing and when the long term savings happen, क्योंकि ये sectors भी return 25-30 साल में देते हैं. तो ये हमेशा ध्यान रखना कि बैंक की कैपेबिलिटी नहीं है. Banks are not capable of giving loans for long term because banks take deposits for short term. तो बैंक कैसे लेंगे लोन 20 साल के लिए? तो बैंक इसकी टोपी उसके सर करके लोन देते हैं. 5 साल की डिपॉजिट ली, 20 साल का लोन दिया, फिर 5 साल के लिए नए डिपॉजिट आ गए, उससे पुराना लोन को चुकता किया. तो इससे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सेक्टर्स डेवलप हो जो हमें ओवरऑल काफ़ी डेवलपमेंट या ग्रोथ दे सकते हैं. सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया दैट वी आर डेवलपिंग इन दिस मैनर. Then the survey concludes this chapter by talking about the outlook, that is future about things. One is healthy balance sheet of the bank and the corporate. Second is stronger capital level of NBFCs, which is a good news. तो इंडिया जो एक प्रॉब्लम में फंसा था, twin balance sheet deficit, banks not doing well, corporates not doing well. प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने कहा था एक बार, अरविंद सुब्रमण्यम सर की बात कर रहा हूँ, that India has 4 balance sheet deficit: banks, corporate, रियल एस्टेट, एनबीएफसी. थैंकफुली इनमें से 3 की हालत तो ठीक अब हो रही है. बैंक्स, रियल एस्टेट, एनबीएफसीज. बैंक्स, कॉर्पोरेट्स, एनबीएफसीज, इन 3 की हालत ठीक है. रियल एस्टेट में इतनी चोरी चकारी है, लोगों के इतने श्राप लगे हैं, कैसे इतनी जल्दी ठीक होगा? जस्ट जोकिंग ऑन द लास्ट पार्ट, डोंट टेक मी सीरियस. आई एम ओनली सेइंग दैट इन रियल एस्टेट देयर इज अ लॉट ऑफ मर्की बिजनेस. The money involved is not always white, and that means that the trouble there with Real Estate Regulation Act especially can't be resolved easily. It will take a lot of time with too many pending projects, and people have transferred money from one project into another, so it will need a complete structural overhaul. So real estate में थोड़ा time ज़रूर लगेगा, but the good news is that NBFC, banks and corporates are back on track. And then demand for bank credit has been buoyant. In fact, this buoyancy of demand is, buoyant means increased, higher. और ये buoyancy of demand अभी भी चल रहा है. एक अच्छा समाचार वो है हमारे लिए कि भले ही इकोनॉमी 3rd क्वार्टर में उतना ग्रो नहीं की, लेकिन परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, डिमांड फॉर क्रेडिट, ये सब अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं. एंड देन इन्वेस्टमेंट साइकिल इज शोइंग साइंस ऑफ रिवाइवल.
Investment is rising in the economy comparatively. It is showing that overall growth is impending. 30% of GDP was the investment to GDP ratio in India in 2019-20. 34% of GDP is the investment to GDP ratio in India in 2022-23. And this 4% increase in investment to GDP ratio in spite of COVID pandemic, Russia-Ukraine war, tighter liquidity and uncertainty in the global economy. इतने दिक्कतों के बाद भी हमारा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है। तो जो ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने सलाह दिया मिस सीतारमन को कि जाके कॉर्पोरेट को डांटिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ा रहे, वो पक्का द हिंदू ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि अखबारों में ये लिखा जा रहा है लगातार इन्वेस्टमेंट ही नहीं बढ़ रहा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं बढ़ रहा। पर आप सोच के देखिए, इंडियाज़ जीडीपी वाज 220 लाख करोड़ in 2019-20 and our investment to GDP ratio was 30%, which means we were investing 66 lakh crore in 2019-20. In 2022-23, India's GDP will be 270 lakh crore and our investment to GDP ratio is 34%, which means we will be investing close to 95 lakh crore. Now from 66 lakh crore to 95 lakh crore, an increase of 29 lakh crore, that is an increase of 45% in 4 years. That's a 10% per annum increase in investment to GDP ratio. And then still people are complaining that investment नहीं बढ़ रहा है इंडिया में। हाँ, ये ज़रूर मैं मानता हूँ और ये आप भी दिमाग में रखिएगा, मेरी बात से कोई एक्सट्रीम पे मत सुनना। Don't listen to my words on extreme. But yes, I agree that India's investment to GDP ratio should pick up faster, pick up more, but that is what the survey says, that with ease of doing business, improvement in credit cycle, improvement in leverage of banks, improvement in corporates becoming less leveraged now, all that implies that future of investment has to be comparatively much better in India. And India is expected to be one of the fastest growing insurance market. In fact, survey says that FDI will also be coming in insurance, and by 2032, we will be in the top 6 insurance market in India. Survey also recommends that FDI limit should be increased in insurance. At the moment, we have kept it at 74%. So with that FDI limit increase, more and more people will participate in insurance sector in India. And I again repeat my point, insurance growth and credit growth together show well, because insurance growth, pension fund growth implies more long-term savings, credit growth implies more investment possibility. So overall growth for the economy will be relatively better. So there we are. This I already told you, that India's pension sector will be 6th largest and increased in FDI limit. So I get over with your chapter 4 today. I will be meeting you on Saturday for a discussion on chapter 5 inflation at same time. 4 बजे सैटरडे को मिलता हूँ आपको, इन्फ्लेशन का डिस्कशन करेंगे। 4 o'clock Saturday for a discussion on inflation. Thank you. Have a great evening. Bye-bye.